हे गाइस, तो अगर आपने मेरे लास्ट के 2 वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि मैंने स्टार्ट की थी एक हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग। तो ये पार्ट इस ड्राइंग का लास्ट पार्ट होने वाला है। अगर आपको इससे पहले के 2 पार्ट्स देखने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में रिंकल्स ड्रॉ करते टाइम हमें सबसे पहले रेफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कौन से रिंकल कितने डार्क है। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि हमें देखना पड़ेगा कि कौन से रिंकल कितना ज़्यादा डार्क है। फिर रिंकल्स के ऊपर हमें उस तरह से लेयरिंग देनी है। अब जो फोटोग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूँ उसके ऊपर बहुत सारे रिंकल्स की डार्कनेस सेम आपके पास जो भी अवेलेबल है ब्लेंडिंग स्टम्प से कर सकते हो या फिर कॉटन बर्ड से भी कर सकते हो। जो आपके पास अवेलेबल है आप उससे ब्लेंड कर अभी मैं रेफरेंस फोटो में देखते मैंने सारे रिंकल ड्रॉ करो, उसके बाद मैं उसके ऊपर शेड तो इस प्लान में थोड़ा चेंज है। पहले प्लान था ऊपर तक बनाने का, मगर अभी सेम टेक्निक फॉलो करते हुए हमें यहाँ भी रिंकल्स ड्रॉ करने हैं। तो गाइस मैंने यहाँ पे पहले से ही इंडेंटिंग करके रखी थी। इंडेंटिंग के लिए मैंने यूज़ की थी 0.5 की सेलो की मैकेनिकल पेंसिल, जो कि बहुत ज़्यादा चीप होगी, आपको 15 to 20 रुपीज़ में इजीली मार्केट में मिल जाएगी। अब मैं सिंपली यहाँ पे पहले शेड कर दूंगा। और सिंपली वाइट जेल पेन इंडेंटिंग के ऊपर यूज करूंगा। अभी मैं रेफरेंस फोटो में देख के लिप्स में और टीथ में शेड कर दूंगा। टीथ में भी बहुत से लोग शेडिंग नहीं करते, पर टीथ में भी हमें शेडिंग करनी चाहिए। वहाँ पे जो जो हाइलाइट्स है उससे स्केच और ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है, तो टीथ में भी शेड करना चाहिए। यहाँ पे भी वाइट बियर्ड है तो इंडेंटिंग टेक्निक में यूज करूँगा। और अभी मैं सिंपली इंडेंटिंग के ऊपर वाइट जेल पेन यूज करूँगा। बियर्ड के बाद मैं नेक में भी शेड करूँगा। नेक यहाँ पे बिल्कुल डार्क है तो मैं सिंपली पूरा डार्क कर दूँगा। और उसके बाद फिर क्लोथ्स बिल्कुल वाइट है तो वहाँ पे ज़्यादा शेडिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो गाइस अभी तो ड्राइंग कंप्लीट है, बस मैं यहाँ पे थोड़ी बॉर्डर कर दूंगा और जो बाहर शेड हो गया है गलती से वो मैं इरेज
दूंगा, फिर हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगी। तो गाइस अभी तो ड्राइंग कंप्लीट है, अब टाइम है फिक्सेटिव का।